Good morning, students. Myself, Shikha Singh, Assistant Professor, SIRT Pharmacy. In previous class, we discussed about the general introduction of the controlled drug delivery system. Now, today we will discuss the factors affecting the dosage form. Various factors affecting the dosage form. These factors are divided in three categories: physicochemical factors, biological factors, and pharmacodynamic characteristic of the drugs. Physicochemical factors also subdivided in four subclass: dose size, ionization, pK, and aqueous solubility, partition coefficient, and stability. And biological factors also subdivided in four parts: biological half-life, absorption, partition coefficient, and stability. Next, pharmacodynamic characteristic of the drugs, also classified in a subclass: therapeutic range, therapeutic index, and plasma concentration, duration of action, and side effects of the drug. In first, physicochemical factors में फर्स्ट है जो हमारा वो है डोज साइज. For orally administered system, single dose of 0.5 to 1 gram is considered maximal for conventional dosage form, as well as for the sustained dosage form. जो इसमें हमारा ओरली एडमिनिस्टर्ड सिस्टम है उसके लिए हमने सिंगल डोज कितना 0.5 टू 1 ग्राम कंसीडर किया है. ठीक है. For large dose size compound can be formulated into liquid system. Large dose size compound के लिए हम liquid system को prefer करते हैं, formulate करते हैं. Second आता है हमारा ionization, pK and aqueous solubility. Most therapeutic compound are weak acid or base, since the unchanged form of chemical entity permeates across lipid membrane. Hence, there should be relation between pK of the compound and its depend on the solubility of drug in a aqueous media. So इसमें क्या होगा, जो भी हमारा थेराप्यूटिक कंपाउंड है वो तो या तो पीक एसिड होंगे या बेस होंगे. ठीक है. इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंपाउंड्स विद वेरी लो सॉल्युबिलिटी less than 0.01 milligram per ml are inherently sustained. So these release in GIT will be limited by the dissolution of drug. For example, digoxin, grisoflavin and salicylamide. थर्ड जो आता है इसमें हमारा क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट. Partition coefficient: when drug administered to GIT to produce therapeutic effect, it must cross biological membrane. Without cross biological membrane, drug is useless. No use of drug. So it must cross biological membrane having the lipoidal nature. In this condition, partition coefficient becomes important to determine penetration of these membrane barrier. तो क्या होगा, जो ड्रग होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस हो जाएगी और वही साइड ऑफ एक्शन पे जाएगी. कंपाउंड हैविंग increased partition coefficient are predominantly lipid soluble, so in body for long time due to localization in lipid membrane of the cells. इसका एग्जांपल क्या है, phenothiazine. Whereas compound having low partition coefficient will have difficulty in penetrating membrane with poor viability. जिसका partition coefficient क्या है, कम है, वो difficult होगा उसको penetrate करने में membrane को. So उसकी viability क्या होगी, poor होगी. Next आता है हमारा stability. Stability, drugs unstable in GI environment cannot be administered as oral control drug delivery system because of viability problem. जो भी हमारी ड्रग है वो GI environment में अगर अनस्टेबल है तो ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए वो यूजफुल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ वायबिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी. दिस इज ड्यू टू मोर ड्रग इज डिलीवर इन इंटेस्टाइन एंड सब्जेक्टेड टू अ डिग्रेडेशन. इसलिए हम जो हमारी मोस्टली ड्रग्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में डिलीवर करेंगे. और सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रोपेंथेलिन. नेक्स्ट हमारा आता है क्या,
बायोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. Therapeutic compound with short half-life are excellent candidate for the sustained release preparation because can reduce dosing frequency and also increase patient acceptance. So अगर हमारा जो biological T half है वो क्या होगा? 2 hours से क्या होगा? Less than होगा. Then poor candidates for the sustained release. इसका एग्जाम्पल है फ्रूसामाइड एंड लीवोडोपा. अगर 8 घंटे टी हाफ जो है हमारा वो क्या होगा? 8 hours से कम होगा तो क्या होगा? नॉट यूज फॉर द सस्टेन प्रिपरेशन बिकॉज देयर इफेक्ट इज ऑलरेडी सस्टेन. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन, वॉरफेरिन एंड फेनेटोइड. अगर हमारा जो टी हाफ है वो क्या होगा? 2 to 8 hour के बीच में होगा तो मोर सुटेबल फॉर द सस्टेन प्रिपरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. नेक्स्ट आता है हमारा absorption. Absorption for sustained drug release, rate of release should be slower than the rate of absorption. Absorption के लिए जो हमारा rate of release है वो क्या होना चाहिए? Slower होना चाहिए. Slower than the rate of absorption. Compound with low absorption rate are the poor candidate for the sustaining system. नेक्स्ट हमारी इसमें कुछ मेथड्स हैं. मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सस्टेन मैकेनिज्म. फर्स्ट क्या है? अटेन टू रिटेन देम विद इन द स्टमक. This allows slow release of drug which then travels to absorption site. Administration of food with these drugs shows sustaining effect but food creates variable effects, hence others methods develop. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई. फूड जो है वो हमारा इंटरफेयर कर रहा है इसलिए हमने क्या किया? दूसरी मेथड्स को डेवलप किया. नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लो डेंसिटी पैलेट्स और द कैप्सूल. दिस सिस्टम फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द gastric juice delaying that transfer out of the stomach. इसमें हमने ऐसे पैलेट्स या कैप्सूल्स बनाए जिनकी डेंसिटी क्या थी? लो थी. नेक्स्ट सिस्टम हमने क्या डेवलप किया? यूज ऑफ बायोएडेसिव मटेरियल. The principle is to administer a device with adhesive polymers having affinity for gastric surface, mostly mucin coat. इसका एग्जाम्पल क्या है? राइबोफ्लोविन. Metabolism. Drugs that are significantly metabolized, especially in region of intestine, can slow decreased viability from slower releasing doses form, as the drug is released at the slower rate to these regions. Less total drug is presented to the enzymatic process during a specific time. For example, allopurinol was more extensively metabolized in the intestinal wall when given as a sustained release preparation. Next इसमें आता है हमारा margin of safety. Margin of safety and therapeutic effects. Then sustained release delivery forms tend to reduce side effects by keeping the plasma drug levels within the therapeutic range. Toxic effects are reduced by avoiding plasma skipped, which commonly seen with the conventional dosage form. नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग. फर्स्ट, therapeutic range. A candidate for the controlled drug delivery system should have a therapeutic range wide through such that the variables in the release rate do not result in a concentration beyond this level. Next आता है therapeutic index. Therapeutic index is equal to Cmax upon the C minimum or the Cmax upon the MEC. सो टी थेरापेटिक्स इंडेक्स क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए. इज सुटेबल फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नेक्स्ट आता है हमारा क्या? प्लाज्मा कंसंट्रेशन. प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ड्रग्स सच एज reserpine, whose pharmacological activity is independent of its concentration, one poor candidates for the controlled drug delivery system. Next आता है duration of action. Duration of action is related to the biological T-half of drugs. Next आता है side effects of drug. Some systemic toxicity may occur, like potassium therapy.
ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोजेस फॉर्म. थर्ड था physicochemical factors, biological factors and pharmacodynamic characteristic of the drugs. Thank you.